Today's topic is edit distance. This is Levenshtein's distance, and we will cover the dynamic programming algorithm. So you can solve this problem, edit distance, by many other methods, but Levenshtein's distance is actually solve your problem using dynamic programming. So what is Levenshtein distance? We first take the overview of the edit distance, and then we see how it works, and we will then explore the algorithm and the execution of this algorithm. So here you can see the Levenshtein distance between two strings A of AB, A comma B of length A and B respectively is given by Levenshtein distance A comma B, where where A and B are the two strings, string A and string B. And now you want to compare the distance between the two strings. The distance between the two strings means how these two strings are far away together and how they are close together. So if they are close together, it means they are almost the same strings, but we need, few changes. And the changes are insertion, deletion, and substitution. It means if you are writing a string on your text editor like Microsoft Word or any other editor, and you have a spell checker over there. So what's happened whenever you make a mistake and you right click over there, so it will give you some suggestions. Okay, these are the nearest words which may be matched with your spelling mistake word. So you choose from them, and that is the technique you use to correct your spelling mistake words on your text. So Levenshtein distance, edit distance is actually solve your problem, and the formula of this Levenshtein distance is here. I comma j. I and j is actually describing the length of two distances. I is the length of A and j is the length of B. So we take maximum if minimum I comma j is equal to 0. Okay, so it means the formula is if the value of minimum returns 0, then we will take the maximum value. Otherwise, if it is not equal to 0, then we will compute the distance I comma 1 comma j plus 1, and then I comma j minus 1 plus 1, and I minus 1 comma j minus 1 plus 1. And among these three distances, we will choose the minimum distance. So this is the way how we can compute the distance between the two strings. This is actually a physical distance. It does not belongs to the meaning of the two sentences. It will just tell you the physical distance between two strings. Look at here. So the Levenshtein distance is a number that tells you how different two strings are. The higher the number, the more different the two strings are. For example, the Levenshtein distance between kitten and sitting is 3, since at a minimum 3 edits are required to change one into the other.
Okay, what are the three edits are required? Kitten and sit-in. K-I-T-T-E-N, S-I-T-T-E-N. So K and S. If you substitute S with K, then sit-in becomes the kitten. Similarly, sit-in, if you just substitute I with E, then it becomes sitting. And in third, if you just insert G at the end of sitting, then the word becomes sitting. So an edit is defined by either an insertion of a character or deletion of a character or replacement of a character. So these are the three operations actually decide the how for your first string with other string, or how close your first string with other string. So this is actually the way you use the Levenshtein distance. Okay, so now we see the actual working of algorithm, how this algorithm works. So Levenshtein algorithms calculates the least number of added operations that are necessary to modify one string to obtain another string. The most common way of calculating this is by a dynamic programming approach. It means there are three operations: edit operation, insertion, deletion, and replacement. And it will tell you how many operations required to become a one string to another string. So this is actually describe the number of operations of an edit operation. So dynamic programming approach will solve your problem and tells you how many operations you require. So this is the algorithm. A matrix is initialized measuring in the m, n cells. Okay, let me see how many wheels are connected here. So okay, so a matrix is initialized measuring in the m, n cell the Levenshtein distance between the m characters prefix of one with n prefix of the other words. So m and n are the two strings. The matrix number of characters in two strings. M is the number of characters in first string, n is the number of characters in second string. The matrix can be filled from the upper left to the lower right corner. Each jump horizontally or vertically corresponds to an insert or a delete respectively. The cost is normally set to 1 for each of the operations. The diagonal jump can cost either 1 if the two characters in the row and column do not match, else 0 if they match. Each cell always minimize the cost locally. This way, the number in the lower right corner is the Levenshtein distance between both words. So now we see how this algorithm works. Here
is the actual algorithm. Okay, first what you actually pass, you pass two strings. So here we are passing txt1 and txt2. These are the two strings we are passing to this algorithm, and here we have a for loop I0, I less than length text1, I plus plus. So here we are computing the length of the first string. Suppose your first string is Google. Okay, and the second string, you can say you have look at. So you have these two strings, Google dash and look at dash. Now here you compute the number of characters in Google and look at. Okay, so if we compute the characters Google, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And if we include dash, so this is 7. And if we say look at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 characters, and here we have 7 characters. So we start from 0. So we are starting from 0, and now the length of the second string is j, length of the first string is I, and number of operations. So edit means the 3 operations. Edit means 3 operations performed in Levenshtein distance. The first operation is substitution, then deletion, and then insertion. So these are the 3 operations, and we start with added 0. It means there is no need of any operation to perform between 2 strings because 2 strings are same. So if text I, text1 is not equal to text2, okay, so here we compute the each character of the string, and we see if both characters are same in the string, so the added is 0. If both characters are not in the same in the string, then added is 1. So this is the key element which actually compute the distance between 2 strings. Okay, here we use match operation, and we say mat I plus 1 j plus 1 is equal to minimum, and mat I j plus 1 and I plus 1 j plus 1 and mat I j plus edit. So mat is 2-dimensional. Mat is a 2D matrix. Okay, and we have initialized this matrix using some method in any language, C++, Java, Python. So I have written the code in Python, so I will show you after this lecture here how this code is works, but the algorithm is actually this, which actually compute the 3 distances and take the minimum among them. Okay, so if the algorithm starts here, and now the value of I and the value of j. Okay, so at I and j location, so I plus j, this is the ith location, and this is the jth location. So ith location is this, jth location is this,
and I plus 1 and j plus 1 location, okay, is this location. Okay, so we have to fill this location here. This is the ith location and this is the jth location. So start with 0 0 and check, okay, what is at 0 0. Okay, I value 0, j value 0, and we see at 0th location text 1 contains j, text 2 contains L, and these two characters are not same. So if these characters are not same, so it means added value is 0. So what is the value of added here is 0. Added value is 0 here. Okay. So we can say we are taking added 0 here. Okay. And so this is condition is not true. So the added value is 0. Met I plus 1, j plus 1. Okay. So what is the value of I plus 1 and j plus 1? It means I value is 0, j value is 0. So the 2D matrix say now the mat is 1. Sorry. So the mat one comma 1. So this 1 comma 1 means this value 1 comma 1. So at this location mat I plus 1 and j plus 1. Okay. Now compute the distance minimum. What we will take minimum of mat I, j plus 1 and plus 1. So what is at mat I plus 1? It means 0 plus 1 and sorry, this is I and j plus 1. This is I and j plus 1. So first we will take 1 and then we will take j, sorry, this is 0 and this is 0 plus 1. Okay, so what is at 0 and 0 plus 1? So this is I is 0. Okay, and what is j? J is this, so j is 1. So we are at this location, and at this location we have the value 1. So this is equal to 1. Now, that's 1 and plus 1 is equal to 2. Now, met I plus 1, 0 plus 1 and j is 0. So here we have also, and this is plus 1. So the plus 1. So this is 1 plus 1 is equal to 2. Now, met I is 0 and j is 0 and added is also 0 plus 0. It means 0 at 0 we have 0 and 0 plus 1. So this is equal to 1. So which one is minimum? So this value is minimum. So we will put this value 1 over here. So now you can see the added is 0. We say 0 plus 1 and this is plus 1 and this is plus 1, and now this in the plus 1 plus 1 2 plus 1 plus 1 2 and 0 plus 0 0. So 0 is the added. Oh sorry, this is 1 because both strings are not same.
and edit is 1. This is not, because strings are not same. When strings are same, then 0. So we will take here, we add 1. Okay, so the value is 1 here. So now you can see I, J, okay, this is edit, this is I, comma J plus 1, this is I plus 1, comma J, and the minimum of them is 1. So this is the way we fill the actually distance between two characters. So this is 1. And now again we compute the next. So I is 0, J is now 1. So in the next slide you see when I is 0 and J is 1, so we move here and I plus 1 and J plus 1. This is the value. Okay, and now we again compute. This is the added value. Look, the second value is, so first value is L and the second value is O. Okay, so we have to fill. This is 2, this is added value, this is your text 1 value, text 2 value, and we are putting 2 here because after computing the distance by the same way as we have seen in our last slide. Okay, so one more time we will see how we do this. Now the value of I is 0 and the value of J is equal to 1. Okay, so the value of mat is will be added. I plus 1, it means 0 plus 1, and similarly J plus 1, it means 0 plus 1, which is equal to mat 1, sorry, J is 1, is 2. So what is 1 comma 2? 1 comma 2 is this value. Okay, so we compute according to this formula. Mat I is 0 and J plus 1, J is 1 and then plus 1 is equal to mat 0 and then 2. So 0 and 2 means this is your I row is 0 and this is 2. So this value will take mat, this is mat 0 comma 2. Okay, and here because L and O are not same, so added is 1 and here we add 2 plus 1. Similarly we compute mat 0 I plus and 1 plus 1, which is equal to this value and then plus 1. So 1 plus 1 is equal to 2 and this is 1. 2 plus 1 is equal to 3. 2 plus 1 is equal to 3. So this is 2, this is 3 and this is 2. So minimum is 2. So we put 2 here. And in the same way
we go 3, then 4, then 5, then 6, then we go to the next row, okay, and the next row is this, and we will fill this. So now you see, after comparing two strings, the final value is 2. Okay, so the final value is 5. So it means you need 5 edit operations to match the first string with the second string. Matching means if you want to change first string into second string, then you need 5 edit operations. Edit operations means deletion, insertion, and substitution. So this is the way we use the Levenshtein distance, and this distance is useful for comparing two strings. Okay, now we see how the code works. Okay, and what is actually a code. So let me show you the code. Here we have a code. Now let me show you the code. Okay, this is the code. I think I can change the font, maybe, yes, but so here you can see the code. Can you see the code? How many members are there? Ammar Rafiq, Muhammad Maz. Maz, can you see the code? No, sir. Okay. Now let me share the code with you. Now please tell me. Can you see the code now? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So I have written this code in Python. Okay. So now you see the Levenshtein distance txt1, txt2. It means you are defining a function Levenshtein distance. You are passing two strings text1 and text2. Here you are creating a 2D array by using numpy in 0. So you are creating 2D array. The name of the 2D array is distances. Okay. So first you what should be the length of the 2D array? So length of first string, this is I, and length of second string, this is j. Okay. So distance for y in range length text1 plus 1. So distance y comma 0. So y comma 0 means you are putting value from 1 to the range of length in a row and in a column. So x in the range length x2 plus 1. So this one is the column y and x rows. So you are putting the x rows with the sequence of numbers 0 to the length of the first string and 0 to the length of the second string. And final distance, print distance txt1, txt2. It will print the complete matrix that we have drawn in our presentation, and then it will print the final distance, means the last distance we have computed. The next function is print distance, actually taking two things, 2D array text1 and text2. Final distance is initially 0, and for I in range length text1 and j. So this is the code
that I have shown you in my slides, I, J, and edit 1 and edit 0. Okay, and here is the computation function which actually computes the minimum value, get minimum integer mode. So this is the third function that actually compute the minimum among the three values. So distance I, J plus 1, distance I plus 1, J plus 1, and distance I comma J and plus edit. Okay, and this is the final distance I comma J, and it will return final distance as well. Okay, and here is the main program. In this main program, what I am doing, I am computing three distances: Google with Sugal, Google with Noodle, and Google with Hurdle. Okay, and we see which one is nearest to the Google: Sugal, Noodle, and Hurdle. Okay, so look at here. If we just execute this program, so it is telling us this: Google with Sugal is 2.0, final distance 3.0, Google with Noodle and Google with Hurdle is 4.0. It means the Sugal is very near to Google, but Noodle is some far away with 3 edit distance, and Hurdle is also foremost away from the Google, so this is 4.0. So this is computing the distance between the strings. Yes, and do you want to ask something? I should print also final distance between the text 1 and text 2. $61 on and txt2 is okay. So now again we first save it and we save it, and now again execute it. Now it is telling us the distance between Google and Sugal is 2, Google and Noodle is 3, and Google and Hurdle is 4.0. So this is the way we use dynamic programming, and using the dynamic programming we compute distance between the two strings. So this is a very useful algorithm, and you use this algorithm for checking the spelling mistakes in your text editor, and text editor suggests you the nearest word, and you select the nearest word from the list. So this is the this algorithm is actually help you a lot for selecting different words from the list if you are if you do not know the exact spelling of the word. Okay, now any question now you want to ask up to this point? Sir, I have a question. Yes. सर इसमें बेसिकली जैसे फॉर इंस्टेंस हमने अगर जैसे गूगल और सूगल पे चेक किया राइट, तो वो बेसिकली एक एक जो उसका अल्फाबेट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, वो एक एक करके सबको चेक करेगा राइट. उसके बाद फिर
वो अब मूव देखिए करेगा और फिर हाँ उसकी अब नंबरिंग। मैं आपको बताऊं, जैसे सुगल और गूगल में दो डिफरेंसेस हैं। अगर मैं जी को एस से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, और आपके पास एक मैं आपको जी के बाद ए से जो है इंसर्ट कर दूं ए, ठीक है, और ई को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो इसके मायने है कि इसमें आपके पास एडिट डिस्टेंस इसका 2 आ गया। लेकिन गूगल और नूडल में काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि आप देखें पहले तो आपको एक तो जी को चेंज करना है, एन से रिप्लेस करना है, एक तो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन आ गया। फिर आपको जी को, जो डबल ओ के बाद जी आ रहा है, उसको डी से रिप्लेस कर देना है, ये सेकंड ऑपरेशन आ गया एडिट आपके पास, सही है। फिर एल आपको डिलीट करके ए लिखना है और फिर उसके बाद एल इंसर्ट करना है। तो इस तरह 4 ऑपरेशंस यानी कि आपके पास आ गए। तो ये आपको बता रहा है कि एडिट डिस्टेंस 3 है। सिमिलरली आपके पास हर्डल में आप देखें कि कितने ज़्यादा हैं, तो वो कह रहा है कि इसमें आपको एटलीस्ट जो है वो एडिट ऑपरेशंस जो है वो 4 करने पड़ेंगे। तो गूगल फिर हर्डल के साथ जो है 4 का डिस्टेंस है। तो जो कम से कम चेंजेस आएंगी सुगल को गूगल बनाने में, वो सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इसलिए जो है सुगल जो है वो नियरेस्ट है गूगल से। जी, ओके क्लियर सर। हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी। आपका? तो आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने अभी कोड भी मैं रख दूंगा आपको, सही है, एलएमएस पर। तो आप इस कोड को यूज़ करें, देखें, और मेरी प्रेजेंटेशन को भी देखें, सही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, स्पेशली जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और वो आपको क्या कहते हैं, न सिर्फ ये आपके करेक्टर्स के लिए बल्कि कुछ लोग वर्ड्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी जगहों पे ये आपके पास लेविस्टन डिस्टेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम था। इसमें कोई इशू है तो बताइए, वरना फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके मायने की कोई इशू नहीं है आप लोगों को इसमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। चले पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक मिनट शेयर करता हूँ टॉपिक्स, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास जो शेयरिंग होगी, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये पीडीएफ में बुक नज़र आ रही होगी, आ रही है आप लोगों को बुक नज़र? यस सर, आ रही है। ठीक जी है। सर। आज देख लेते हैं टॉपिक, ताकि एग्जाम तक के टॉपिक्स हम आज देख लें। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में बेटा आप लोगों ने, जो मैंने आपको करवाया है वो नैपसैक प्रॉब्लम करवाई है, ठीक है। ये नैपसैक प्रॉब्लम कराई है मैंने आपको। आपको वॉर्शल फ्लॉइड एल्गोरिथम कराया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फ्लॉइड एल्गोरिथम, याद आया होगा आपको, ये लास्ट टाइम कराया था, ठीक है। और आपको एडिट डिस्टेंस कराया, लेविस्टन डिस्टेंस का, ये करवाया चैप्टर 8 में डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे ग्रीडी अप्रोच पर। और ग्रीडी अप्रोच के एल्गोरिथम्स आप लिख लें कि हम लोगों ने ये कवर करने हैं। ये अब आपके पास वेडनेसडे की क्लास है, फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट वीक में बस 2 क्लासेस हैं, उसके बाद क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसमें जो एल्गोरिथम्स करने हैं वो हैं, नंबर 1 क्रुस्कुल एल्गोरिथम, चाहे तो आप लिख लें या आप लोग जो है वो वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर आपको करना है Dijkstra's एल्गोरिथम, दिस वन। फिर आपको करना है Prim's एल्गोरिथम भी करना है आपको, दिस वन Prim's एल्गोरिथम। तो 3 एल्गोरिथम्स तो ये कर रहे हैं। फिर आपको करना है हफमैन कोडिंग, और ये आपको करना है हफमैन कोडिंग, ठीक है। हफमैन ट्रीज एनकोडिंग करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको एल्गोरिथम्स तो करना ही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो फिर जो है आपको कुछ नए एल्गोरिथम्स करा लेंगे। अच्छा, प्लीज गिव मी ओनली 1 मिनट। अली, ओके, सो आई एम बैक एंड अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप ज़्यादा तो एल्गोरिथम से आप लोग खुद देख लें कि आपके और कौन से ज़्यादा आपको एल्गोरिथम कर रहे हैं। आपने कोई जहन में कोई एल्गोरिथम हो या कोई टेक्निक हो तो वो भी मैं इधर आपको एल्गोरिथम के कोर्स में कवर करा लूँगा। तो है कोई आपके पास कोई एल्गोरिथम? अगर नहीं भी है तो अभी 3 क्लासेस में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, सर ये एल्गोरिथम्स हमें और करने हैं, आप ये करा दीजिए। क्योंकि आगे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। अब जैसे कि इटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स में आपके पास जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, सही है। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, आउटलाइन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड है, सही है। या अगर आप जो है वो एनपी प्रॉब्लम्स और नॉन एनपी प्रॉब्लम्स पे, नॉन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स पे चली जाएं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो है कोर्स वो हफमैन कोडिंग तक आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें अगर आपको करनी है उसके लिए मैं रेडी हूँ, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाले एल्गोरिथम्स हमें फर्दर करने हैं और ज़रूरी है। तो ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग सोच लें। और फिर वेडनेसडे की और नेक्स्ट 2 क्लासेस यानी 3 क्लासेस में हम जो है प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रिस्कुल एल्गोरिथम, डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम, फिर हफमैन ट्रीज एल्गोरिथम्स हम करेंगे। ये 4 तो हम एल्गोरिथम्स करेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। नहीं? ठीक है, तो इसके मायने कि आप लोगों को अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अली आमिर भी आ गए हैं, ठीक है, और राफे शुएब। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है राफे और अली? नो सर, अभी मैंने वैसे रिवाइज भी करना है आपके सारे लेक्चर्स, मेरे से नेट नहीं चल रहा था सही से, तो नहीं, वो मैंने मैंने सारे अपलोड कर वीडियोस दिए, वो जी मैंने मैंने अपलोड कर दिए, वो आप सारे डाउनलोड फिर कर मैं लें। जी लेक्चर्स देख के फिर अगली क्लास में प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं आपसे पूछ लूँगा। चलो ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं राफे, आपको कोई क्वेश्चन? माज, अम्मार, आप लोग बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं क्लास अभी आज सिर्फ इसी लेक्चर पे एंड करता हूँ और बाकी कोड और प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा। सलाम सर, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है अम्मार। सर वो मुझे पूछना था कि फाइनल एग्जाम के लिए आपने कोई गाइडलाइंस दी है अभी, अगर अभी आप देंगे? नहीं नहीं, फाइनल गाइडलाइंस तो बस यही है कि जब यूनिवर्सिटी ऑन होगी जो हमें मालूम है, उसमें फाइनल एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम में ये है कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, पूरे कोर्स को कवर करना है एग्ज़ाम में, तो वो हम लोग करेंगे। क्योंकि वैसे तो जो है कोर्स ना तो इधर कोई मिड टर्म हुआ है ऐसा और ना कोई ख़ास क्विज़ेज़ हुए हैं, तो हमें इस चीज़ को तो कंप्लीट करना है। ठीक है, चलें, तो अगर अब कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा तो फिर मैं क्लास ऑफ करता हूँ आज, ठीक है। और आप लोग भी जो है वो फिर देख लीजिएगा, इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह ओके सर, हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।